हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्यूरियस जूनियर को हमने डाउनलोड कर लिया था और कैसे हम उस पर ऐप बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज भी। इसी हफ्ते या मतलब कल ही नई वीडियोस नई ऐप्स आई हैं इस पर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे स्क्रॉल करके इनके अंदर आंसर दे दिएगा और आपको स्टार्स मिल जाएंगे, बैजेस मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अब आप कोई भी ऐप बनाते हो तो आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट मिलता है। अब अपनी ऐप जो हमने पब्लिश करी है वो सारी आ जाएंगी, ट्रेंडिंग पे जो चल रही हैं या लेटेस्ट। अब मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी थी, चलो आज से हम देखते हैं हम कौन सी ऐप बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली ना ज़्यादातर लोग ना ये कहते हैं कि कोडिंग मोबाइल पे कैसे हो सकती है, कोई हो थोड़ा ना सकता है, लेकिन क्यूरियस जूनियर ने इसे पॉसिबल कर दिया और अब ये हो भी सकता है। अब हम ये ऐप बनाते हैं, पासवर्ड जनरेटर। आजकल ये बहुत ऐप चल रही है। स्टार्ट करते हैं, चलो। Hello, my curious friends. Today we are going to make a password generator app. So what is a password? A password is a unique collection of different characters and symbols used as a key to get access to somewhere or something. We use passwords to log our phones. We also use it to access our online profiles on websites and apps like Instagram, Facebook, etc. So a password is an important key to keep your belongings safe. And guess what? Today we are going to make an app, a password generator, to generate passwords which you can use for keeping your online account safe. In this course, we will practice instructions, algorithms, logics, and functions. But before coding, let's get an overview of the app. This app will consist of a numpad, one input field for password length, 4 options to include different types of characters, and an output area for displaying generated password. Users can enter a value in the password length input field and mark all the required types of characters to include the password. After that, on clicking the Generate Password button, a password is generated and displayed. Interesting, right? So let's start coding the app. कैसी लगी वीडियो? लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बता देना कैसी लगी क्यूरियस जूनियर एप्लीकेशन। Password generator consists of 2 steps. In this step, we will add the UI components and the numpad. We will first add the input field for accepting the password length. Now, we will add the options for the user to choose the types of characters according to which the password is generated. These options are symbols, numbers, lowercase and uppercase. Next, we need to add the generator output field to display the generated password, and finally, we will add the numpad. This is all we need for step 1. So let's start coding this step. अब कोडिंग करनी है ब्लॉकली प्रैक्टिस, और ब्लॉकली सबसे मेन ऐसी कोडिंग है जो हमारे फ्यूचर में यूज़ होएगी। अभी हमने जैसे मर्जी लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम एक बार साइड करते हैं। ओह नो 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 नो, Click on the highlighted lesson to start coding. कोड करना है, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। अब हमने ये कर लिया सिंबल का। अब इसमें एक कोड लगाएंगे, सिंबल के बाद नंबर, उसके बाद लोअर केस अल्फ़ाबेट, उसके बाद अपर केस अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अब रन करते हैं कोड को, देखते हैं क्या। ठीक है, बढ़िया हुआ है। अब नेक्स्ट पे दबाते हैं। चलो, क्विज सबका फेवरेट। अब बताओ कमेंट्स में इसका आंसर दे देना, फर्स्ट और सेकंड का। What are the available options to include in the password? मैं नहीं बताऊँगा, मैं तो कुछ भी कर दूँगा। मैंने जानबूझ के गलत करा है ताकि आपको
आपने कमेंट में आंसर देना, फटाफट जाके कमेंट में आंसर दो, चाहे वीडियो को रोक दो लेकिन कमेंट में आंसर देना, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलो सारों को सिलेक्ट कर देते हैं, आंसर आपने देना, ठीक है। Welcome back. Before moving to the code part, let's discuss the algorithm our app is going to follow to generate the password. So first, our app accepts the length of the password or the number of characters or symbols in the password. Then it checks for the conditions selected by the user to generate the password. Here, in our app, there are 4 conditions or options. Include numbers, include symbols, include lowercase alphabets, and include uppercase alphabets. So, if the user inputs 4 as length of the password and marks include numbers, include symbols, and include lowercase, then a password of 4 characters having these 3 types of characters get generated, like, or, etc. So, according to these conditions, a random character from each type is appended to a variable called password until the number of characters is equal to the value of the length variable. This variable is then displayed in the output field. So first we will create 2 variables, variable length for storing the input value of length and variable password for storing the generated password. Then we will define a function called generate password, which gets called when the generate password button is clicked. Inside the function block, we will add an instruction block called set variable length to set the value of the length variable from the input field. Next, we will add a repeat loop block, and inside the loop block, we will add an if condition block. This if condition block has 4 conditional checks for the choices of character types. Inside each if condition, we will add an add character instruction block according to the condition check on each if check. For example, inside if include symbols option is checked, we will give the instruction to add symbols to the password. So, if any of the if check is true, the instruction block inside the if condition adds a new character of corresponding type to the variable password. This checking and addition of characters happens one at a time till the number of characters stored in the variable password is equal to the value inside the variable length. After that, the value stored inside the variable password is displayed in the generator output field. So let's create this app quickly and share it with our friends and family so that they can use this password generator app to generate passwords and keep their accounts safe. तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इस कोडिंग का फ़ायदा क्या है, इससे होता क्या है, कुछ सीख थोड़ा ना रहे हैं हम कोई सिंटैक्स वगैरह, लेकिन ये बिगिनर के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट भी आएगी इसी में, तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना। 1 मिनट। अब पहले सारी जगह लगा लेंगे, फिर उसके बाद ऐड कर लेंगे। ओह नो 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 नो,
फंक्शन ब्लॉक, ओ सॉरी, फंक्शन ब्लॉक में डाला था। गो बैक टू गुड। नो यार, स्क्रीन छोटी पड़ रही है, एक मिनट। अब हमारी ऐप बन चुकी है। क्विज फिर से इसका भी आंसर देना जरूर। व्हाट इज द वेरिएबल लेंस टू? ठीक है, अब नेक्स्ट का भी फटाफट लिख दो। कर दिया? कमेंट कर देना, ठीक है। अब हमारी ऐप फिनिश हो चुकी है। अब हम इससे पहले टेस्ट करते हैं। Congratulations! You have earned a badge. You can share this badge with your friends by clicking on the share button. पब्लिश करते हैं और पहले से टेस्ट भी करते हैं। पासवर्ड जनरेटर by our YouTubers। ठीक है, अब इसे पहले टेस्ट करते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं हम डाल देते हैं 8 कैरेक्टर्स का, ठीक है। और ये सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जनरेट पासवर्ड एक आ गया। तो अब हम इसे चलो पब्लिश करते हैं। डिस्क्रिप्शन बाय आवर फ्यूचर कोडर, ठीक है। Congratulations! You can view, like, and share this app to make this app a trending one.